Class 6, Geography, Chapter 6, Major Landform of the Earth. In the previous chapter, we have learned about the lithosphere, which is the solid uppermost layer of the Earth. If you see the Earth from the space, its surface looks plain, but in reality, the Earth has many up and down. These variations on the land surface are known as relief features or landforms. मीन्स अगर हम ऊपर स्पेस से देखते तो हमें ऐसा लगता है कि वो समतल बहुत सम्राट और सीधी सी एक धरती है, पर ऐसा नहीं है. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, अप डाउन है लैंड में, तो उसे रिलीफ फीचर्स और लैंडफॉर्म कहते हैं. देयर आर वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म on the earth's surface. These landforms include plain, plateau, mountain, hill, valley, etc. These land features appear to the permanent, but in fact they are continuously undergoing changes. These landforms are the result of two processes, internal process and external process. मतलब landform बनने के दो तरीके हैं, internal process और external process. These processes are the responsible for the change occurring in the landform. Some of these change occur suddenly, but some are gradually. मतलब ये changes होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो कुछ suddenly होते हैं, कुछ मतलब आराम से अपने आप होते हैं. Remarkably, the ground on which we stand is slowly moving continuously, moving and taking place within the earth. Volcanic activities, the earthquake are the result of the internal process. यानी कि अगर हम देखें तो ये जो है धरती मूव करती रहती है स्लोली, कंटिन्यूसली, और ज़्यादा जब मूव करती है तो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थक्वेक जैसी चीज़ें इंटरनल प्रोसेस में होती हैं. दे ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ एंड द रिजल्ट इन सडन फॉर्मेशन ऑफ अ मेजर लैंडस्केप like mount, plateau, plain, valley, continent, hill, etc. The external process work on the earth's surface and they modify these landscape. The external process are directly or indirectly affected by the sun energy. The whole process of the modification of the landform by the external process is known as gradation. यानी कि जो पूरा प्रोसेस होता है मॉडिफिकेशन का लैंडफॉर्म का एक्सटर्नल, उसे ग्रेडेशन कहते हैं. It consists of two processes, that is degradation and aggradation. In degradation, elevated landform of the earth are lowered down by the various agents. मतलब नीचे की तरफ हो जाती है किसी वजह से, जैसे थे कि wind, river, glacier, ocean, current, etc. की वजह से. This process is known as erosion. While in aggradation, the depression of the earth's surface is filled up. It is also known as the deposition. The landform or the earth's surface can broadly be divided into three parts: mountain, plain and plateau. अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, जिसमें है पहला माउंटेन. माउंटेन आर द नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. इन द अदर वर्ड, हाईली एलिवेटेड लैंड विच राइज अबव द सराउंडिंग रीजन आर नोन एज माउंटेन. मतलब ये हाईली एलिवेटेड लैंड है, मतलब ऊंची, काफ़ी ज़्यादा ऊंची हुई हुई. They formed by the internal forces. ये internal forces की वजह से बनती है. Generally mountain have a broad base and conical top. मतलब बहुत चौड़े चौड़े बेस होते हैं और मतलब conical top होता है, यानी ये नुकीला सा. On the mountain temperature remain low as compared to the plain area. जो वहाँ का temperature है वो low रहता है प्लेन एरिया के मुकाबले. सम माउंटेन आर इवन हायर देन द क्लाउड. मतलब वो क्लाउड से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं. सच माउंटेन हैव अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट. यानी कि कुछ माउंटेन्स में काफ़ी कोल्ड यानी कि ठंडा क्लाइमेट होता है. दीज माउंटेन हैव अ लार्ज रिवर ऑफ आइस दैट आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियर. मतलब इन माउंटेन्स के पास एक रिवर्स होती हैं आइस की, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं. ग्लेशियर आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रिवर्स. बोटारो, सियाचिन, Yangotri, Gangotri, and the important glacier of the Himalaya mountain. Mountain have a great height and a sharp sloping features through which the river flow downward. यानी कि sharp slope features होते हैं जिसकी वजह से rivers नीचे की तरफ आती हैं. Generally, the mountain are found in the continuous chain. Their chain are known as a mountain range. These range are usually found parallel to each other. This parallel range extend to the other 100 of kilometers. यानी कि एक चेन में जो हमें माउंटेन्स मिलते हैं उसे हम माउंटेन रेंज कहते हैं. द हिमालय इन एशिया, द अल्फाज इन यूरोप एंड द एंडीज इन साउथ अमेरिका आर द एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन रेंज. यानी कि एक some mountain are under the sea also. Mountain were not there when the earth was young and they may not be there when it become old. Like human being, mountain are born, grow old and die, but this is long process. मतलब human के केस से comparison to ऊपर है तो mountain के केस में से काफ़ी ज़्यादा long process है.
Type of mountain. On the basis of their shape, size and height, mountain may be the following four type: fold mountains, block mountains, volcanic mountains, residual mountains. अब इनके बारे में स्टडी करेंगे. Here we have fold mountain. These mountains are formed when the earth crust bend due to the earth movement, यानी कि अर्थ मुड़ जाती है. Internal movement cause fold on the earth surface. Its result into several ups and downs, like this in the picture. The upper part of the fold is known as anticline, while the lower part is called saline. यानी कि ऊपर का पार्ट जो होता है फोल्ड का वो एंटीलाइन होता है और नीचे का पार्ट होता है सलाइन होता है. फोल्ड माउंटेन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ पैरेलल रेंज. इनकी पैरेलल रेंज होती है. मोस्ट ऑफ द माउंटेन आर द अर्थ आर द फोल्ड माउंटेन. मतलब जितने भी माउंटेन है धरती पे ज़्यादातर फोल्ड माउंटेन है. दीज माउंटेन आर कैरेक्टराइज्ड बाय रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक, यानी कि इनकी बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची पीक है. ऑल द फोल्ड माउंटेन्स आर ऑफ डिफरेंट एज. ऑन द बेसिस ऑफ एज दे आर नोन एज द यंग फोल्ड एंड ओल्ड फोल्ड, यानी कि एजेस के हिसाब से तो ये यंग फोल्ड्स और ओल्ड फोल्ड्स माउंटेन है. यंग फोल्ड माउंटेन्स जो हैं पॉइंटेड पीक होती है उनकी. हिमालय, अल्पास, एल्प्स और एंडीज रॉकीज जो है इसके यंग माउंटेन हैं. और ओल्ड माउंटेन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पैनिंग इज यूरोप, ओके, अल्पशीना नॉर्थ अमेरिका और यूआर रशिया में. ये मेजर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं. और अरावली रेंज जो है पेनिनसुलर इंडिया में ये हमारी ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज है. ब्लॉक माउंटेन. Block mountain are formed when a landmass between the parallel faults in the earth crust is pushed up or when the land around it sink. यानी कि मतलब जो ये इस तरह देखेंगे जब आसपास की ज़मीन दबने लगती है तो उसके बीच की जो ज़मीन है ऊपर आने लगती है. ब्लॉक माउंटेन. द uplifted part of the landform is known as the host, while the lowered landform are termed as graben. Vosges Mountains and Rhine Valley in the Europe are the example of block mountain system. Rhine Valley is located between the Vosges and Black Forest. Here you can see. Mesta in Spain and the northern and the southern uplands of Scotland are some other example of host and graben. Volcanic mountain. These mountains are made up of the accumulation of the volcanic material ejected from the earth interior, यानी कि अर्थ के अंदर से निकलने वाला मटीरियल. They have comparatively gander slopes. Mount Kilimanjaro, Africa. Mountain Fujiyama, Japan. Okay, Mexico is the Etna and Vesuvius, Italy are the example of volcanic mountain. मतलब use of advantage or of mountain. Uses or advantage. Mountain are rich source of water. Mountain glacier are the source of water for many rivers. These perennial rivers provide water to inland navigation, hydroelectricity and irrigation. यानी कि पानी जो है इनका काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है. Mountain provide many building materials such as granite, marble, limestone. ये सब हमें mountain से मिलता है. Many precious stones like diamond, ruby, sapphire and opal are also found in mountain. ये सब भी mountain से मिलते हैं हमें. River valley and terraced farm are ideal for cultivation. People grow tea, wheat, fruit, etc. in the mountain area. They provide grassland for cattle grazing. Mountain provide a variety of flora and fauna. Mountain provide shelter for wild animals. Mountain are rich source of timber and the other raw material like resin gums. Mountain maintain ecological balance, check environmental pollution and soil erosion. Some mountainous regions act as a tourist site. Tourists visit the mountain of their see beauty. Mountains are also popular for several types of sports like skiing, river rafting, paragliding, hang gliding, etc. लिमिटेशन ऑफ माउंटेन. दे लैक फर्टाइल सॉइल, मतलब इनके पास ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होती. रग्ड माउंटेन टेरेन मेक ट्रांसपोर्ट एंड फिजिकल कम्युनिकेशन डिफिकल्ट, मतलब कम्युनिकेशन डिफिकल्ट होता है. माउंटेनियस एरिया आर नॉट सच फेवरेबल फॉर कल्टिवेशन ड्यू टू स्टीप स्लोप, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, कोल्ड क्लाइमेट. Due to the above limitation, mountains are thinly populated. Barely 12% population of the world is living in the mountainous area. Plateau are highland with a broad and more or less flat surface. हाईलैंड होता है मतलब ब्रॉड होता है और
more or less flat surface होता है. Due to the flat top surface, these landforms are also known as tableland. Their height vary from few hundred meters to 1000 meters. Plateau generally have steep slopes on both sides, but few plateaus have a steep slope on the one side and the gentle slope on the other side. For example, Deccan Plateau has both steep and a gentle slope. Plateau occupy 1/3 of the Earth's surface. These are found in every continent. Like mountain plateau may also be young or old. The Deccan Plateau in India, the Eastern Africa Plateau in Kenya, Tanzania, and Uganda, and the Western Plateau of Australia are the example of old plateau. Type of plateau: intermontane plateau. These plateaus are partly or completely surrounded by mountain. The highest and the largest plateau on the earth are intermontane plateau. Tibet Plateau is the world's highest plateau. It is also known as the roof of the world. It is about 4,000 to 6,000 मीटर above the mean sea level. देखिए तिब्बत माउंटेन है और ये सी लेवल से 4,000 से 6,000 ऊपर है. Okay, Piedmont Plateau. This plateau is formed at the foothill zone of a huge mountain. This plateau lies between mountain range on one side and the sea or a plain on the other side. Colorado Plateau in the North America and the Podmania Plateau in the South America are the example of Piedmont Plateau. Okay, it's a Colorado Plateau. And इनकी एक तरफ तो माउंटेन होता है और दूसरी तरफ लैंड या फिर वाटर होता है. Continental Plateau. These plateaus rise abruptly from the lowland from or the sea. Deccan Plateau, Chota Nagpur Plateau, Western Plateau, East African Plateau are the main continental plateau of the world. Usefulness or advantage of plateau. Plateau are rich in a mineral deposit. Many of the mining areas in the world are located in the plateau area. यानी कि काफ़ी रिच है मिनरल से और काफ़ी माइनिंग एरियाज जो है प्लेट्यूज में ही है. प्लेट्यू आर ऑल्सो ह्यूज सोर्स ऑफ गोल्ड एंड द डायमंड. वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका प्लेट्यू आर वर्ल्ड फेमस ऑफ अ गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग. Kola, Panna and Anantapur are the famous gold and diamond mines of India that lie in the Deccan Plateau. The Deccan Plateau were formed volcanic activities. They form igneous rock which are the main source of black soil. Black soil is useful for the cotton cultivation. यहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है. When the river fall down from the high plateau, they form waterfall. जब ऊंचे किसी प्लेट्यू पे से रिवर आती है तो वो एक वाटरफॉल क्रिएट करती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ओरिजिनेटेड बाय द फॉलिंग वाटर. इन अ कंट्री अनट्रू वाटरफॉल ऑन द रिवर सुबर्णरेखा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ऑन द जोग फॉल्स, ऑन द रिवर Sharavati, Karnataka are significant waterfalls that are used to generate hydroelectricity. It's a intrue waterfall. They can be developed as place of a tourist destination. Example, coastal area of the Deccan Plateau. Plateau are rich in coal, manganese, iron, limestone, etc. For example, huge reserve of these minerals are found in the Chota Nagpur Plateau in India. Okay, limitation of plateau. Some of the plateau in the world are composed of a hard rock, therefore less favorable for human settlement than the plain area. मतलब वहाँ रहने के लायक नहीं है. Farming activities on the plateaus depend on the rainfall. If there is a lack of rainfall, they are not suitable for human settlement. यानी कि अगर खेती बाड़ी भी है वो सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड करती है तो इसीलिए वो भी ह्यूमंस के लिए सही नहीं है. Plains are low-lying flat stretch of a land. Generally, they are not more than 200 meters above the mean sea level. The plains are usually formed by the deposition of the silt and sediments brought by the river and their tributaries. Plain can be extremely flat or slightly rolling. Most of the plain are very fertile and useful for the agriculture activities. मतलब जो plain areas हैं cultivation के लिए और fertile soil के लिए बहुत famous है. Gangetic Plains of India, Indus Plain of India, Nile Valley Plain Africa, Yangtze Plain China, Paris Plain North American formed by river. ये सब river से बने हुए हैं. मतलब river से आने वाली silt और जो भी soil थी उससे create हुए हैं. Use or advantage of plain. Plain provide fertile soil, therefore they are useful for agriculture activity. Their climate is suitable for human settlement.
The coastal plain have seaport, harbor, lake and lagoons. These areas have fertile delta which are used for cultivation. Plains are flat which make the construction of a transport network easy. Thus the plain area have dense network of road and railway. River flowing across the plains are useful for navigation and irrigation. There are greater facility for trade and manufacturing, so most of the world great cities are situated on plain. Plain are provide more flat land that is suitable for building house and for cultivation. Since plain provide above favorable condition for human settlement, these are very thickly populated region of the world. यानी कि काफ़ी ज़्यादा populated है क्योंकि ये सारी facilities हमें प्लेन्स में रहने के लिए मिलती हैं. प्लेन कंसिस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो प्लेन है 1/3 जो है लैंड लेता है वर्ल्ड का, पर जो सपोर्ट करता है 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये सपोर्ट करता है. इन इंडिया ऑल्सो द इंडो गैंगनेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री. Limitation of the plain. All through plain are fertile and useful for human settlement, but some plains are too dry, too wet, or too cold to be suitable for the use of large number of people. For example, plain area Rajasthan, Sahara Desert, Atacama Desert, etc. are not suitable for human settlement. उनके रहने के लिए सही नहीं है. Effect of increasing population on landform. अब लैंडफॉर्म में जितना पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है उसका क्या इफेक्ट है. वेरियस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस. दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ. मैन इज यूजिंग द लैंडफॉर्म टू मीट हिज डिफरेंट नीड, बट ही इज एक्सप्लॉइटिंग द लैंडफॉर्म एट अ लार्ज स्केल विच इज रिजल्टिंग इन द मिस यूज ऑफ अ लैंडफॉर्म. यानी कि ह्यूमन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. मैन जो है लैंडफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा अपने हिसाब से यूज़ करता है. उसकी वजह से हमारे लैंडफॉर्म्स जो है जो मिस यूज़ हो रहा है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग मिस यूज ऑफ अ लैंडफॉर्म. Overgrazing, overcultivation, industrialization, deforestation, etc. are the human activities that lead to desertification. Landforms are not only affected by the human activity, but they also get damaged by the natural climates like earthquake, volcano, tsunami, flood, etc. They bring huge loss of life and property. To control such losses of a life and property, we may have to take some which steps so that we can save our landform for the future generation. We should be fully aware about such natural calamities and take all mitigation measures so that their bad effect would be lessened. We should not misuse natural resources such as land and water. We should not construct house on fertile land. We should not throw garbage on land or in water. We should not cut tree unnecessarily. We should plant tree. Landforms are the great gift of nature for human being. We should not misuse them for fulfill our selfish needs. So that is for all the landform chapter, and this chapter is telling you how things, natural resources or landform we have, so we should respect them. So for the till then, bye.